नमस्ते दोस्तों। ये समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ लाइव ऑन यूट्यूब। लाइक लास्ट टाइम also when I have done, I couldn't complete the session properly, and a life coach, a parenting coach now. And why are they doing? What the purpose of what they are doing? So इस रियलाइजेशन के लिए वी विल हैव दिस होल सेशन। और सेशन की स्टार्टिंग में जो मैंने सोचा था कि आई विल जस्ट स्टार्ट विथ अ सिंपल साउंड हीलिंग प्रोग्राम। सो आई विल बी यूजिंग दिस साउंड बोल टू मेक दिस सेशन a bit uh, energy, like energy will be flowing all around, तो energy के साथ हम एक दूसरे से connected रहेंगे. So let's start with this session with this energy flow. I first wanted you to connect with this so that we can talk about it a little bit. So this is to stabilize your mind. आपके जो दिमाग है, जो मन है, उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए, so that we will be able to interact better. We will be able to understand the things better. तो ये कनेक्शन इसलिए है कि आप जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, और कई पेरेंट्स को ये भी लगता है कि व्हाई शैल आई सेंड माय चाइल्ड टू दिस फोरम वंस अगेन। एकेडमिक्स के लिए वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, ऑलरेडी खेलने के लिए यूज़ कर रहा है, और ये सेशंस के लिए भी हम मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करने दें। दिस इज़ नॉट फेयर। बट डू बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर हैंडलिंग दिस टेक्नोलॉजी। जैसे अगर किसी की भी बात की जाए, आप इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ मच यू आर यूजिंग इट. So yes, it is wisely said that the technology should not use you, you should use the technology. तो इसी के साथ I will just request you to please sit down comfortably, जहाँ भी आप बैठे हैं comfortably आराम से बैठ जाएं, और उसके बाद जो आवाज़ आ रही है उसको आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए, and let it flow throughout your body. ये जो आवाज़ आ रही है, जो भी आप इसे सुन रहे हो, इसको अपने पूरे बॉडी में सर से लेके पैर तक फैल जाने दीजिए। सर से लेके पैर तक उसे पूरी तरह से प्रवाहित होने दीजिए। एंड देन यू विल फील दैट you are really connected on energy level. So let's do that just for 2 minutes. Let's start it. Please sit comfortably. Close your eyes. Close your eyes. And let's listen to this sound and let it get into each and every part of our body. So, with this, we have really connected on energy level where you will be able to understand me better. You will be able to get the things, whatever I'm trying to share, in a better way. So, as this session is for teenagers, we won't be talking much about what can be done or what should be done by the parents or by the adults. It's especially for the teenagers, like how they shall
do their work comfortably, how they shall enjoy each and every moment that they are blessed with, and how they can really focus on their work that they are doing rather than getting distracted. तो अभी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं अभी टीनेजर से डील करती हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये होता है कि मैम आई रियली वांट टू डू, I really want to go ahead. I really want to get good marks as everyone expect me to do. But when I sit to study, I feel distracted. थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि जस्ट अब नहीं हो पाएगा, आगे नहीं कर पाऊँगा, और और भी अलग-अलग बातें मन सोचने लगता है। So somehow I am not able to focus very well, isn't it? आप में से कई टीनेजर्स जो अभी वॉच कर रहे हो, दोज हू आर ट्राइंग टू लिसन टू मी, यू आर वेरी मच अवेयर कि आप सबके साथ ऐसा होता है। और जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, लेट्स थिंक अबाउट देम कि उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई आर दे नॉट एबल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एज वी आर गेटिंग? तो मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि हम जान ही नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। लाइक राइट नाउ आई सेड, while connecting with you all, I had so many obstacles again. I am using that mobile net. That is again a kind of problem because it can get disconnected any moment. Even the quality of video is not so good on mobile network. Apart from that, you see, while I was trying to do it somehow, right now also, I if you are trying to comment, if you're telling something, I don't know, I'm not able to see it anywhere. So that is one of the constants. So it is like I am just speaking, and I am speaking based on what all I have already heard from my students. जो मेरे बच्चों ने बार बार कंप्लेन की है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन दोज पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से? जैसे मुझे याद है, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम खेला करते थे, और माँ को बुलाना पड़ता था खेलने से कि कितनी देर खेलना है, और एंड वी डिडंट रियलाइज व्हाट टाइम इट इज। हम खेलते खेलते भूल जाते थे 4 घंटे हुए हैं, 5 घंटे हुए हैं। वी नेवर रियलाइज। बहुत डांट पड़ती थी माँ से घर आके कि तुम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, यू विल कीप ऑन प्लेइंग लाइक दैट, और ऐसी ही सारी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। सो दीज वर द कमेंट्स, दीज वर द सॉर्ट ऑफ हार्श ट्रीटमेंट दैट वाज डन टू अस एट आवर टाइम, क्योंकि हमारे पास खेलने के लिए वो मैदान था जिसमें हम घंटों बिता देते और पता नहीं चलता था। बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। We really like couldn't trace the time, couldn't understand that it is really too late and we should go back to home and start working on what we have to work. तो वही अभी हमारे आप जैसे बच्चों के साथ हो रहा है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, उससे कुछ अलग इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जा रहा है। अलग क्या है, आप सब समझ रहे हो। आप सब जानते हो कि ये जो ताम-झाम वाली दुनिया है, ये जो वर्चुअल दुनिया की हम बात करते हैं, जिसमें एक क्लिक पे लाखों लाइक मिल जाते हैं, मालूम है ना? और उस लाखों लाइक के लिए आज हम अपनी असल दुनिया को छोड़कर उसी में बस जाने का सोच रहे हैं। ये मेटा वर्ल्ड, ये वर्चुअल वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड में वो वर्चुअल फ्रेंडशिप, वो हज़ारों लाखों दोस्तों से मिलना-जुलना, बातें करना, एक ही टिप में आप के बै किसी भी कोने में बैठे हुए किसी से भी बात कर पा रहे हो। तो इन सब की वज़ह से थोड़ा-सा छिछलाव तो होगा ही ना। आप सोच कर भी, चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाएँगे, एंड यू विल कीप ऑन मूविंग टू दैट डायरेक्शन। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। माय फोकस इज़ ओनली टू इंटरैक्ट विथ यू। You know, I have to switch off my WhatsApp. I have to switch all the other things. If I don't know if someone is trying to message me, I won't be able to go through it because I know I will get distracted. तो मेरे लिए फोकस ये है। सेम वे, whenever you are doing anything, the focus must be the thing that you are doing, और उसका एक ही मूल मंत्र है बच्चा, पता है क्या है? लव व्हाट यू डू। पर ये कहना बड़ा आसान है, लव व्हाट यू डू। कैसे उस चीज़ को लव करें जिसको करने में मज़ा नहीं आ रहा है, जो इतना बोरिंग है। स्टडी को आज हम लोगों ने इस तरह का बता दिया है कि स्टडी का सिनोनिम हो गया है बोरिंग।
यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु रियली डोंट वांट टू स्टडी, फॉर देम स्टडी इज समथिंग विच इज वेरी बोरिंग। अब ये बोरिंग वर्ड स्टडी के साथ जुड़ कैसे गया? वेदर वी टॉक अबाउट कि इंग्लिश पढ़ना बेकार है, वेदर वी टॉक अबाउट कि सोशल स्टडीज क्यों पढ़ना है मुझे, या फिर दोज हु आर मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स उनके लिए मैथ्स क्यों पढ़ना है मुझे, इट्स सो बोरिंग, आई डोंट वांट टू रीड इट, आई डोंट वांट टू गो फॉर इट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें उस तरह के मेंटर नहीं मिले। मेरी एक कोलीग है, उन्होंने बताया, शी इज अ केमिस्ट्री टीचर, एंड शी shared her story with me that how she hated chemistry till her almost 12th standard. But in 12th standard, she got such a teacher, such a chemistry teacher, such a mentor, that she is aspiring to do PhD in the same subject. And she has been teaching chemistry for quite, I guess, 7, 8 years right now. So, this is what the passion becomes when you get the right person in your life. अब वो राइट पर्सन आपको कहाँ मिल रहा है, कहाँ से उस राइट पर्सन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर श्योर इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी योर पेरेंट्स, येस दे आर द फर्स्ट पर्सन हु आर योर mentors who really help you to move ahead, but they are not the only one. उनके अलावा आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके आसपास के कोई और रिलेटिव्स हो सकते हैं, बट the safest one that you can have is your parents. अब आपके पेरेंट्स आपके लिए जैसा सोचते हैं, जो कर रहे हैं, नो वन एल्स कैन थिंक इन दैट वे, सो दे आर द बेस्ट पर्सन ऑन whom you can trust and along with whom you can really work. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमारी बातों को नहीं समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, दैट शुड ओनली बी डन इन द सेम वे इट शुड बी डन। एट दैट टाइम you really have to take a call and then you need to let your parents understand। तो यहाँ पे फिर आपकी काबिलियत सामने आती है कि what kind of negotiator you are। जैसे अगर आपने थ्री इडियट्स देखी है, तो थ्री इडियट्स में जब ना आर माधवन अपने पापा के पास जाते हैं और एंड पापा सीधा कह देते क्यों करना है, नहीं समझने को तैयार आते हैं होते हैं, पर उसी को जब उनके फ्रेंड आकर के एक्सप्लेन करते हैं, द फादर इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हिज सन रियली वांट्स। ही गेट्स टू नो कि उसके लिए क्या पैशन है, क्या जिंदगी है और क्या फ्यूचर है उसका उसमें। नो पेरेंट वांट अ चाइल्ड टू लिव इन agony, नो पेरेंट वांट अ चाइल्ड टू लिव अ सॉर्ट ऑफ लाइफ व्हिच डजंट मीन एनीथिंग। उनको समझ ही नहीं आता है कि है क्या ये। तो समझाना हमारा काम है उस केस में। वो आपको समझना होगा कि हाउ यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रियल लाइफ फॉर यू, what is real passion for you, what you enjoy and how with that you can move ahead in your life। अब हम जब फोकस की बात करते हैं, जो मैं कह रही थी कि लव व्हाट यू डू एंड दैट इज नॉट सो इजी, सो हाउ वी कैन रियली लव व्हाट वी डू। उसके लिए जो पहला चीज है ना, वो ये है कि वो भी बहुत छोटी सी चीज है और आप हमेशा से जानते रहो कि बी इन प्रेजेंट। बट बी इन प्रेजेंट इन व्हाट मैनर? हाउ यू कैन बी इन प्रेजेंट? क्योंकि हम तो प्रेजेंट में ही है ना, वॉक प्रेजेंट में कर रहे हैं, टॉक प्रेजेंट में कर रहे हैं, लिव प्रेजेंट में कर रहे हैं, सो इट्स लिविंग इन प्रेजेंट। नो, लिविंग इन प्रेजेंट मीन्स वेयर एवर यू आर at that particular time, your focus should only be there at that particular thing that you are doing at that very moment। तो जिस वक्त, जिस समय में आप जो कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पे होना चाहिए। एंड इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, then for sure it will be very easy for you to start loving that। ये सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया जा चुका है बच्चा, कि आप अगर किसी चीज को बहुत ही ध्यान के साथ हर रोज किए जा रहे हो, 4 5 साल में आपको खुद ब खुद उस चीज से इतने पैशनेट हो जाओगे कि आपको उससे कोई अलग नहीं कर सकता। आप फिर कहोगे 4 5 साल, अरे बच्चे देखो, तुम एक ही चीज को कितने साल से पढ़ रहे हो, उसी स्कूल में आप 10 साल से हो, 2 साल और एंड देन यू विल गेट इट, सो 12 साल तो आपके ऐसे ही निकल रहे। सो इन दीज 12 years फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ यू आर ट्रेन टू डू सच सॉर्ट ऑफ थिंग विद द सॉर्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन। जैसे आपको मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते कह रही हूँ कि आप कल ये होमवर्क करके आओगे,
और कल हमें ये होमवर्क सबका सब ये कल मुझे मिल जाना चाहिए। आपको ये पता चला नहीं चला एंड यू आर लाइक थिंकिंग कब करूँगा मैं, मेरे पास टाइम भी नहीं है, उस टाइम ये हो जा सो you have taken your mind from that particular time to the future कि कहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अरे you need to be there at that particular time of time, क्योंकि अभी जैसे ही आप ये होमवर्क के मोड में चले गए एंड आई विल डू दैट टाइम और वो कैलकुलेशन चल रहा है, यू हैव स्किप्ड फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि यू ट्राई टू बी इन द मोमेंट, दैट पार्टिकुलर मोमेंट, लाइक राइट नाउ यू आर हियर, यू शुड बी हियर, तभी आप इसको एन्जॉय कर पाओगे, नहीं तो इट विल बी अगेन अ वर्थलेस थिंग फॉर यू, इट वोंट मेक अ सेंस टू यू एंड you will just move ahead from this. So this is what the real conversation is, where you are able to make an impact in such a manner that the people who are there with you, they stay till the end. And right now this technological constant and all, the sort of work that I'm doing it for the first time, I'm not able to understand like how to get to know that where they are, whether the people are really listening to me or not. Like I can just look at the kind of this view showed to me, like one person or two-person is still waving, but it is skipping, like there is two, then three, then four, and then five, and then again come back to one. So this is what it is, but I don't know, I still have to present it, I still have to stay committed to what I have thought of, I still need to do what I promised to myself, isn't it? So even one person is watching, that makes a difference to me, and that will definitely create a difference in that particular person's life. So let's come back to being focused on whatever thing you want to. उसके लिए मैं आपको कुछ exercises बताती हूँ that you must be already aware of, but still you can start practicing to get into that. जैसे आपको दौड़ने में जीतना है, like you want to just run a race and win in that, what do you have to do? You need to know, not you need to know what are the techniques, not just you can keep on running and win. Then everyone will win, हर रोज दौड़ दौड़ के कोई भी जीत जाए ना, किसी अगर पार्टिकुलर इंसान को जीतना है तो आपको टेक्निक्स भी जीत सीखने होते हैं कि ऐसे पैर उठा के चलना है, ऐसे स्किप करना है, इस तरीके से टर्न ले सकते हैं, अगर कुछ चोट लगी तो इस तरीके से करना है। सो दीज आर ऑल द ट्रेनिंग्स दैट यू आर टेकिंग जस्ट so that you can run that race and win that race. इसी तरीके से अगर आपको कंसंट्रेशन बनाना है तो बड़ा आसान है ना कि यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग दैट यू आर डूइंग, बी इन द प्रेजेंट, लव व्हाट यू डू, बट हाउ टू डू दैट, हाउ टू गेट इनटू प्रैक्टिस, तो उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, ऑलरेडी प्रूव टेक्निक्स, जो आपको कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे, आपके मेमोरी भी शार्प होती है उन चीज़ों से। सो लेट्स वर्क ऑन द फर्स्ट exercise that you have already learned so many times from your teachers, from your doctors, even eye doctors ask you to do that, and from your parents. But I don't know how many of you really do that. Just do it for 2 days. I'm not asking you to do every day. Just 2 दिन आप करके देखो and see the difference. And if you find the difference, just keep on doing, because after this experiment that you are doing, you will find that you are getting much more focused on the thing that you are doing. So this is like a pen, the tip of the pen. Just take it the whole hand ahead of you and keep on looking at the tip. Your hand should be complete straight, in a straight line, and your eyes, both the eyes should be focused on the tip of this pen. So this focus should be there for about 10 seconds. Look at that tip for about 10 seconds and slowly and gently, as slowly as you can, just get it towards yourself, near your forehead, and keep on looking it. Keep on looking it and just bring it. Then again, you can take it far from you to the same point. Slowly and gently you have to do that. So this is the first that you can do with the eye, taking it near you and then far from you. And then side to side, same pen, you can take your hand and move towards right side, slowly and gently. You don't have to take your eyes very fast. Slowly and gently you can take it to your side, to the point you can see this pen. So this will help you work on your periphery as slowly as you can, and to the point you can just take it over there and come back. So slowly you have to come, just to show I am doing it. Slowly you have to come back over again and then towards your right side.
So right side, left side, both you have to do. Then the third one, in the same with the pen, you can do three exercises. First one was straight line, farther and near you. Second one was going towards your right and then left. Now, third one. In the third one, what you have to do, you have to make eight in front of you. Okay. So this pen is like this. You can take it 50, 25 centimeter ahead of you minimum. Not, you don't have to count, but at least you can imagine that this much distance is comfortable for you. Place your hand over there. Keep on focusing on this pen tip, and that should be the center. From that center, take your hand down, make a circle like this, oval, and keep on looking at the tip. Come back to that center, then again go up the another oval. So, kind of eight you have to make. So, just keep on making eight and keep looking on the tip. So, this is the third exercise which can help your eyes to look at the periphery as well, and it will sharpen your mind. It will help you to be more focused on the thing that you are doing. So it is very important to work on your eyes so that you can be more focused on the thing that you are doing. अभी अगर हम अर्जुन के बारे में बात करें, that story again you are aware of कि जब Dronacharya has asked all his disciples that who can hit that bird. So they all were like claiming that I can do that. All the disciples were really interested to that. They all tried. But the moment Dronacharya asked what you can see, everyone gave different answers. किसी ने बोला मुझे पूरा पेड़ नजर आ रहा है, मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है, मुझे पेड़ पे वो चिड़िया नजर आ रही है. So everyone has different answers. It was only Arjun who said that I can see the exact eyes where I have to shot. And while he was doing, if you have seen the archers, what do the archers do? They squint when they have to hit an arrow. So that squinting, what does that show? They are actually focusing on that particular thing. So how much you narrow down your focus, that much stronger it is. So we are narrowing down and then working on that particular thing, we do better. So for concentration, there are other exercises also that you can do apart from them. These are the ones which you can do daily before sitting for your studies. So whenever you sit at your study table, the moment you sit, just do that, and you will see that how focused you become later on. Second thing that you can do is with the candle. You can lit a candle. It's not for young kids. If you are comfortable with fire and you can look at that, so that is again a kind of, because that gives energy as well. So that fire energy also soothes you. That fire energy also enriches you with good elements, and you are able to focus much more after that. So this can be done at least once a week using the candle, where you can take a candle and lit it. So the lit candle, you can lit it and keep on looking at the flame of that light for quite some time. You can keep on looking for 1 minute to 5 minutes, or you can even do that for 10 minutes. But what is more important over here, कई लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ देखते रहने से हो जाएगा, and my eyes get tired when I keep on looking at that thing. So yes, for sure your eyes will get tired, but what you need to do is, whenever your eyes are tired, just take your eyes out and then do that again. It's not necessary कि एक ही stretch में एकदम I have to do this in this way, this focus is required. Not at all. Take it easy, और जितनी आसानी से you are doing, that much better you will move ahead. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर कंसंट्रेशन. ये तो आपका काम है, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ना तो आपको टीचर देगा, ना पेरेंट्स देंगे, और ना ही कोई और लाके दे सकता है. दैट कंसंट्रेशन शुड कम फ्रॉम यू, और वो आपको तभी करना होगा वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वंस यू आर रियली अवेयर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. अब क्या होता है कि यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर रियली गिविंग योर बेस्ट इन वॉट एवर वे यू कैन. Still, there are some issues, there are some problems because of which you are not able to do as expected by your parents. तो उस केस में असल में क्या होता है, आपको भी समझने की जरूरत है, एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर डिफरेंट. We all have different sort of uniqueness that we are blessed with. So if you are aware कि कोई लोग जो होते हैं बिना किसी से सीखे कुछ भी किए बचपन से ही ऐसा गाना गाते हैं, ऐसा लगता है दैट रियली दे हैव ईदर लर्नड फ्रॉम सम अदर वर्ल्ड, or when they were in the womb somehow they have managed to learn it.
कोई भी तरह के आर्टिस्ट, those who have really started their life and they tried to show that what kind of unique personality they are. But is it necessary कि अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा करीबी is a great painter and he can paint like MF Hussain or someone great like that means I can also do that, I shall also do that? दैट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो कर रहा है, वो तुम्हारा फ्रेंड, वो तुम्हारा भाई है, रिश्तेदार है, दैट्स व्हाई यू कैन डू दैट? नो, प्लीज नो। इवन इफ योर फादर इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, please don't compare yourself with that. You both are different. This is called multiple intelligences. अभी सबके लिए क्या होता है ना, जो इंटेलिजेंस है हमारा वो डिफरेंट होता है। कोई इंटरपर्सनल स्किल में अच्छा होता है, कोई इंट्रापर्सनल में अच्छा होता है, यानी कि सम पीपल विल बी able to work on themselves far better than anyone else, and some people will be able to more helping other people, let them be more aware। जैसे टीचर्स लोग होते हैं, सो इट इज सेड कि टीचर्स खुद डॉक्टर ना भी बन पाए ना, they help many other students to be the doctors, they help many other students to be the engineers, to be the lawyers, to be anyone that they aspire to be। that's the job of the teacher। तो वो खुद ना हो करके भी दूसरे को बनाते हैं, and that's what intrapersonal skill people that do। Then comes the musical intelligence, logical intelligence, so various sort of intelligences are there। and with that you do understand that what kind of intelligence you are really blessed with। और जब आप उसको समझ जाते हो तो फिर उसके हिसाब से आप फिर काम करना स्टार्ट करते हो, isn't it? Okay, then next comes after the expectation from your parents। expectation तो कभी भी अंत नहीं होगा, that will keep on like increasing only with time। कि अभी 10th में तुमको अगर इतने marks आ गए, in 12th you should get this, in whatever competitive examination you are going for you should get this rank in that, even after that if you are in the college this should be given। तो हर जगह हर स्तर पे आपको अलग तरीके से कुछ ना कुछ expectation गढ़ दिया जाता है, और उसके साथ you have to live your life and keep on doing the things। But it is really sad, can we really satisfy the needs of anyone, the expectation of anyone? Not at all। so what is to be done in this case? Have you ever thought about it? Have you ever thought कि मैं ये फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी जिंदगी वर्थलेस है? And that is what many teenagers think today। they feel worthless most of the time when they realize that they are not at par with the expectations of their parents or their elders। और फिर उनको लगता है कि शायद मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम रियली। और यही वजह है कि बच्चे क्लास में, छोटा सा जगह है ना, बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं है, their own classmates, their own people, and still they are scared to answer, and still they are not confident enough to even say the answer that they are already aware of। मैं ही क्यों बोलूं, अगर बोला गलत हो गया तो? so all these things stop the child to share what they have already learned। so dear children, dear teenagers, just remember one thing: you are really special। but whatever speciality is there you need to trace it। वो जो अंदर माणिक है ना, जो हीरा है, उस हीरे को ढूंढना है आपको आपके भीतर, और उसको फिर पॉलिश करना है। दैट इज योर जॉब। वो अकेले पॉलिश नहीं होगा, ढूंढना आपको अकेले है, पर पॉलिश अकेले नहीं होगा, उसके लिए आप अपने आसपास से हेल्प ले सकते हैं। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द राइट पर्सन। इट्स नॉट नेसेसरी अगेन कि वो आपके आसपास ही हो। they can be far away from you and you can take help of them to polish, to nurture what you are blessed with। तो ये आपकी जर्नी होगी। और उसका अल्टीरियर मोटिव क्या है? यानी कि आप सिर्फ अगर पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई कर रहे हो मार्क्स के लिए और करियर के लिए, ओके, बट व्हाट इफ यू हैव रियली गॉट द मार्क्स? व्हाट देन? व्हाट you have already got the job that you wanted? then what? आपने सोचा इसके बारे में? just find out that why are you doing what you are doing,
आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप अगर यहाँ बैठ के मुझे सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? कुछ तो मतलब होगा ना, कुछ तो आपका सवाल होगा ना जिसका जवाब आप ढूँढ रहे होंगे। So that's all about wherever you have any sort of limitation, any sort of problem, in that case, try to seek help. हमारे पास हर बात का जवाब नहीं होता है. हम सब कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं. And it's not just you, my dear friend. It's not just you. प्राइम मिनिस्टर के पास भी उनका एक असिस्टेंट होता है जो उनको हेल्प करने के लिए होता है पूरे टाइम. जितने भी कंपनी के सीईओज हैं अपना काम अकेले नहीं करते हैं बच्चा. दे नीड एन असिस्टेंट. क्यों? क्योंकि जहां उनकी दिमाग काम करना बंद करे, रुक जाए, सामने बताने वाला हो. So none of us can do the things on our own, all alone. हम वर्थलेस तब हैं when we don't respect ourselves. अगर हम खुद ही खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, how can we expect anyone else to notice us? तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आई एम स्पेशल. आई हैव सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल टैलेंट इन मी एंड आई नो व्हाट इट इज. आई एम अवेयर ऑफ इट. आई एम कॉन्शियस अबाउट इट. And I know how I can nurture it. I know how I can move ahead with that. I know how people will really know about me with that. है ना बड़ी मजेदार बात. तो एक्सपेक्टेशन तो हमेशा होगा. हम किसी और के एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर अपने आप को तो कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं ना. अपने आप पे तो काम ज़रूर कर सकते हैं ना. सो अपने आप पे क्या काम करना है? यू नीड टू बी अवेयर. यू नीड टू बी कॉन्शियस. अब कॉन्शियस फिर बहुत बड़ा टर्म ज़रूर लगता है. एक ऐसा कहते हैं ना, बहुत बड़ा कुछ करना है. नो बच्चा, कॉन्शियसनेस मीन्स जस्ट बीइंग अवेयर. मैं जो हूँ मुझे मालूम है. जैसे मुझे मेरा नाम मालूम है, मेरा काम मालूम है, पर मेरा जो नाम है उसका मतलब अगर मैं किसी से पूछती हूँ, आई डोंट नो. अरे यू शुड नो. क्योंकि आपका नाम आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विद. तो उस नाम के हिस्ट्री को तो जानिए, आप तो जानिए, एंड देन यू कैन शेयर विद द अदर पीपल. अभी इसी के ऊपर मैं आपको अपने नाम की कहानी बताती हूँ और आप सब जान सकते हो कि कितना कुछ आज भी कहने को कहते हैं बदला है पर बदला नहीं है. Everyone, I guess 90% of the people really ask me once they meet, is it Anupam or Anupama? According to them, I have misspelt my name. मुझे अपना ही नाम मालूम नहीं. मैंने अनुपमा की जगह अनुपम लिख दिया. You can just understand that is my identity. My identity is not Anupama. My identity is Anupam. But when I listen from the people, I need to tell them, no, it's Anupam only. But look at the kind of comments, the kind of criticism that I am getting for that name. Now, for what reason? According to those majority of the people who ask me, it should be Anupama, क्योंकि that is a masculine name, Anupam. And Anupama makes feminine. If people know a little bit of Hindi, they will be aware कि अनुपम का कोई अपना लिंग नहीं होता. ओके ना. क्योंकि अनुपम का मतलब क्या है? अतुल्य. अतुल्य मतलब यूनिक. अब यूनिक एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है. हाउ कैन वी डिफाइन दैट इट शुड बी जस्ट मेल और अ फीमेल? उसमें आकार लगाना जरूरी है जस्ट टू मेक इट फेमिनाइन. So again, why I'm talking about it, that these kind of things actually happen. And there we need to understand that people will really do that. They will really feel like that. There has been occasions where people know that I am a lady and still they will say, okay, sir, okay, mister. So this is the comment from most of the people that I interact with. And yes, for sure, when I get friendly, when we do interact much more, then that thing is actually dissolved. Because I say it very clearly, I'm not Anupama. I'm Anupam. So that sort of confidence should be there within you when you are talking about your name. You should have your own story of your name, your own identity, and how you have found yourself, how you really realized that
What do you have to do in this small little life? सबके पास उतनी ही जिंदगी पड़ी है बच्चा, जो एस्टिमेट है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ तक जी पाएंगे, हम नहीं जानते हम कहाँ तक जा पाएंगे, बट एटलीस्ट वी आर अवेयर कि जाना तो है ना, कुछ ही समय के लिए है। वी ऑल आर अवेयर, मे बी आई विल लिव फॉर 20 more years और मे बी जस्ट 1 year, पर जाना तो है ही ना, एंड वी ऑल हैव टू गो। सो बिफोर गोइंग, बिफोर लीविंग, बिफोर टेकिंग माई लास्ट ब्रेथ, what am I going to fulfill? That is very important. तो मेरे बच्चे लोग, for sure you want to make a good career, for sure you want to get better results in your academics, in whatever you are doing, but for what? सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन? अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, जूलियस सीजर। आप लोगों ने सबने सुना होगा शेक्सपियर के जूलियस सीजर के बारे में। एंड इन दैट शेक्सपियर हैज रियली पोर्ट्रेड इट वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल, द फ्लीटिंग मेंटालिटी ऑफ पीपल, that flickering mentality of people. So they are actually called fickle minded. The mob is especially fickle minded. There you can change them based on where you are. They only see where you are, they don't see where you were. So if you are really some sort of recognized people, they will come like bees to a flower. But but if you go down, if they come to know that you have lost everything, you are a failure, they will run away from you. And that's the real life. And that's the truth, the fact of this life that we are blessed with. So be aware. Yes, you need to be aware that this is the reality. Whatever I am getting is not permanent. Nothing is permanent here, my dear friends. Nothing. Whatever you are looking at, that is not permanent. And based on this, I will touch on the last thing for which I have taken this session. So I had to touch the 3 points in this short session. The first one was on concentration, for which I have already given you the tips. Second one was this expectation and expectation of the parents, and how you can take care of yourself, how you can take care of your own identity by respecting yourself, by being aware of yourself, and trying to find out what you really have to do in your life and why you have to do in your life. Now, third and most important thing, which will help you in all the other two things also, and the other aspects of your life, and that is your emotion. How are you really working for your emotion? People say that you should not get angry in that situation. You should not get upset with this. You should not cry in public. How many of you really agree to that? I would request you right now, maybe I will check the comment later if I get it. I would request you, please write it in the comment. I want to read it. Have you heard about such sort of statements? And what do you think? Does it show your weakness when you cry in public? I was really very proud of myself yesterday while taking the session. I was taking the session on relationship, and suddenly I revealed some weak point of mine, and I really literally cried. But I cried for that particular moment when I shared, and suddenly I shifted my emotion, my energy to what was required. So neither I was shy sharing my emotion based on my tragedy, nor I came back to the place where I was really required. I was not there to gain sympathy. I was not there to get help from the people. My intention was to help many others, inspire many others, and let them know that how they can really work on themselves, on their relationship. And I continued with that jump. Unfortunately, I didn't know how to work with this technology. I have to really work on that a lot, where I need to understand that why, like right now also it's 40 minutes almost, but I don't know whether the whole video will be uploaded or not. So coming back to emotions, every emotion is important. Every emotion
has its ulterior motive, but it's all about how you are handling it and how you are working on it. So, if you talk about any of the emotions that you feel, like getting angry at someone, or getting depressed, or worried about your exams, so in that case, how do you feel? Again, that anger, what does it bring to you? So that actually needs attention, and I don't think that it will be done on this session. There, I need a few people to show evidences. I need a kind of interactive session where I can showcase that how anger is really required when it comes to work for your self esteem, when it comes to work for your own safeguard, your own identity. But that anger should not ruin your own mental or emotional health, or the mental and emotional health of others. Even in legal ways, if someone has come to attack on you and you reflect back with an attack, that attack is not considered as such sort of violence which should be punished. Same way, when you are talking about anger, when it is required, it should be there. It is legal, it is right. It is our right to get angry when it comes to our self esteem. But getting angry and ruining ourselves on that, ruining whatever positions we have, that is in no way right. So, there are many ways with which you can work on your emotions. So, here I will be giving you tips on anger management. For anger management, it is said that it's all about the kind of time in between the action when it has really happened and the reaction that you give. So, what is the action? How intense it is for you, and what kind of reaction you are making? So, in between whatever is happening, that is more important. So, for sure, reaction will be there for every action, but how you are responding, what kind of action, what kind of reaction you are giving, that is more important. So, for example, I have noticed that you were just trying to steal something from your friend's bag. I know it is stealing. You might say that I might have asked him, but I know you are stealing because you have not asked or something is there. I noticed you. And I just started shouting at you. How dare you touch that bag? Don't you understand that this, with for this, I can even take you to the police? All these statements I make. What will be your reaction? Because you are caught right now, and you need to accept, you need to apologize, not get more angry over here based on that and start saying and explaining that it's okay if I'm taking my friends. I know it is okay to do that because he will give me permission anyhow. I might not have asked, but he will allow me to take it. So that argument over there is really not required. At that time, you need to understand that that was the wrong thing you were doing and it should be worked upon. I have just given you the example of stealing. It can be anything, any wrong act that you have been doing and you are caught into it, and then you start getting angrier again. That happens actually in the classroom most of the time, and we have really experienced it many times. So that is one thing. Then second example would be the, like, you were really not stealing. You have asked your friend and were doing that, and I just react in the same way. I am very angry and I am doing the same thing at that time. Again you will be angry because you have not done it, and it was not stealing at that point of time. You were aware that you have asked your friend and you were doing. So in that case, what you will do, what you should do actually, yes, you will be angry. Yes, you will feel hurt because what you were not doing, that was tried to point, that was pointed out. So in that case, take some time,
If you want to change your mindset, there are many ways people ask you to do, like start counting or have a drink of water, or but don't run away from there. Don't leave without responding. But how that response should be there, that is very important. You should be still polite. It's not necessary to use your raised voice that time. The person, maybe I will realize soon that okay, what I have said is wrong. That realization is my part, not your part. But your job is to stay calm at that time. Yes, it is difficult, and for that, again, how you can practice? For that, you can do meditation, which mindfulness meditation, which helps. You can get involved in the things that you love to do. You might have seen those people who are really loving their job, who do the job that they are passionate about. They don't get much angry. Even if you say some rubbish thing, no, they will take it very coolly. So you say, oh, you are so cool. So cool means what? They know that this is me and I can handle any situation. Whatever you say to me, that's okay for me. So that's what it is. And with this, again, I will be ending it up. I had to take it, but I don't know if it will be there, and I don't see many people over here. Even it helps more in the interactive session where we can interact with someone. So I would just look into it. If anyone would like to volunteer, you can please contact me on the number given, like 93261938860. So you can contact on this number, and just let me know if you want any help from me. I would end up over here. Thank you so much. Have a great day. Have a great Sunday. I'll end it with this note. I love this sound, and this helps me to. So this is the singing ball, and this helps you to stabilize your mind. So as I have started with this, I'll try to end with this only. Thank you so much.